Hello students, this is ch3 from bioclasses. In this section we are going to learn about pregnancy and embryological development. In the previous section we have learned about fertilization and implantation. We saw the fusion of male gamete and female gamete, sperm and ovum formed zygote, and zygote started rapid mitotic division. And previous session में देखा कि fertilization हो गया, implantation हो गया. Fertilization, sperm and ovum का फ्यूजन हुआ, they formed zygote, और zygote का फिर rapid mitotic division start होता है, और this is called cleavage. And in the result of cleavage, zygote डेवलप्स होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में, देन 4 सेल्ड स्टेज सेल्स में, 8 सेल्ड स्टेज सेल्स में, देन 16 सेल्ड स्टेज सेल्स में, और 8 to 6 सेल्ड स्टेज सेल्ड are known as morula, and then morula continues to divide and it forms a hollow structure. morula जो है वो खुद एक solid ball है 16 cells का, लेकिन ये further divide होते होते then it becomes a multicellular structure, but it becomes hollow because of the presence of a cavity, fluid filled cavity inside it, and that cavity is known as blastocele, and that hollow multicellular structure is called blastocyst. और ये blastocyst after 7th day of fertilization, so it comes down to the endometrium uterus, and it gets attached to the endometrium wall, and it gets embedded in the endometrium wall, और वहाँ जाकर के flex हो जाता है, and uterine wall can also starts division, and uterine wall surrounds the whole structure of blastocyst to provide nutrition for its development. ब्लास्टोसिस्ट में देखा था कि 2 लेयर थे, एक जो इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, जो आउटर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आउटर लेयर बनाते हैं, दैट वाज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड अ ग्रुप ऑफ सेल्स थे जिसको हम इनर सेल मास कहते थे. ट्रोफोब्लास्ट जा करके इंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होते हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट गेट्स इम्प्लांटेड, और इनर सेल मास डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एंड देन इट बिकम्स फीटस आल्सो. अब अटैचमेंट तो हो चुका है, अब फर्दर हाउ द एम्ब्रियो विल डेवलप्स इन द endometrium wall. So after the attachment of uterine cells divides rapidly and covered the blastocyst. As a result, blastocyst becomes embedded in the endometrium, and this is called implantation. After implantation, there will be embryonic development, and implantation ensures continuation of pregnancy. So during pregnancy, how the embryonic development, then fetal development takes place till the delivery of full term or fully growth fetus. Let's see. So pregnancy and embryonic development. Here we can see when trophoblast gets embedded in the uterine wall, the uterine tissue starts dividing, uterine cells starts dividing, and trophoblast forms of finger-like projections, many finger-like projections, and those finger-like projections move towards the uterine tissues, and uterine tissue will also grow to cover up these finger-like projections. And in this way, what happens, this finger-like projection, which is called as chorionic villi, after implantation, finger-like projections comes out from trophoblast, and this is called chorionic villi, and this chorionic villi will be surrounded by uterine tissue, and this uterine tissue and chorionic villi will form a interdigitated structure, and this interdigitated structure of chorionic villi and uterine tissue is called placenta. It will form placenta. Placenta is the functional and structural unit between embryo and the maternal body. Maternal body means uterine wall or endometrium wall.
because fetus is attached to the endometrium wall or endometrium. Placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. प्लासेंटा एम्ब्रियो से एक कॉर्ड से कनेक्टेड होता है. दैट कॉर्ड इज कॉल्ड umbilical cord, and this umbilical cord is the structure which help in transport of the substance to and fro the embryo. The umbilical cord और प्लासेंटा के अलावे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बन जाते हैं. Those extra embryonic membranes provide protections and nourishment to the developing embryo, developing fetus. There are 4 extra embryonic membranes formed during embryonic development. They are the amnion, yolk sac, allantois, and chorion. Amnion is the innermost layer, and this innermost layer includes the embryo in the amnion fluid. एक amniotic fluid है, blue like structure आप देख सकते हैं. These blue structures are amniotic fluid, and this amniotic fluid provides protection to the developing embryo from mechanical stress or any shock or any stress, and as well it provides nutrition to the developing embryo. Second, yolk sac. Yolk sac is a membranous sac attached to the embryo near allantois. Allantois is the third membranous sac है. उस allantois के साथ एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे येलो कलर का, दैट इज yolk sac. इन एग लेइंग मैमल्स में ये yolk बनाता है and it forms corpuscles in mammals till liver takes over. जब तक लीवर नहीं बन जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, तब तक ये ब्लड कर्पशल्स का काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में. थर्ड लेयर जो है एलेंटॉइस. एलेंटॉइस आप देख रहे हैं ग्रीन स्ट्रक्चर्स, एंड दीज एलेंटॉइस इज आल्सो सैक लाइक स्ट्रक्चर. इट डेवलप्स फ्रॉम गट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के गट से डेवलप होता है एंड इट सप्लाइज ब्लड वेसल टू द प्लासेंटा. ये प्लासेंटा को ब्लड वेसल्स सप्लाई करते हैं. और बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में ये तो रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन जैसे काम भी करते हैं, उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं. कोरियन. कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज फीटल मेम्ब्रेन दैट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. सो कोरियन का प्लासेंटा फॉर्मेशन में योगदान होता है. सो द आउटर मोस्ट लेयर इज chorion, and chorion is outer fetal membrane that also takes part in the formation of placenta, because आप देख सकते हैं this pinkish outer layer which is attached to the placenta and it helps in the formation of placenta, isn't it? and इसके बाद हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होते हैं. ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यूट्राइन टिश्यू से इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड दिस इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर बिटवीन यूट्राइन वॉल, यूट्राइन टिश्यू एंड fetus इज कॉल्ड प्लासेंटा. और ये प्लासेंटा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और सो दीज आर द 4 embryonic membrane, extra embryonic membrane, which enclose the embryo, developing embryo inside the uterus, and which provide protection as well as nourishment to the fetus. Now we have learned about the placenta. Placenta is the functional unit between the maternal body and the fetus. And what is the role of placenta in the fetal development, in the embryonic development? Placenta is a very important structure which plays a vital role in the development of embryo or continuation of pregnancy. It works as a nutritive organs, it works as a digestive organ, it works as respiratory organ, it works as excretory organ, it works as endocrine organ, it works as storage organ also. Let us see one by one the functions of placenta. It acts as barrier between the fetus and the mother.
It supplies oxygen, nutrients from mother to fetus. So this is a nutritive organ. It food materials from mother's blood gets transported into the fetal blood through placenta. And digestive organ, it also works as a digestive organ because trophoblast of placenta digests protein before passing them into the fetal membrane. And respiratory organ because oxygen diffuses from maternal blood to the fetus, and carbon dioxide also diffuses from the fetal blood to the maternal blood. So it works as a respiratory organ also. It helps in exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. It removes carbon dioxide and excretory waste. So it works as excretory organs. Nitrogenous waste such as urea passes from the fetal blood into the maternal blood via placenta for elimination by mother's kidney, और उसका elimination mother's के kidney से हो जाता है. Very importantly, it acts as an endocrine gland. How? Because placenta secretes some hormones such as estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, relaxin. These hormones are secreted from placenta, and the role of human chorionic gonadotropin is to stimulate and maintain the corpus luteum until the end of the pregnancy, so that the corpus luteum continues to secrete progesterone hormones till the end of the pregnancy, because progesterone hormones are the pregnancy hormone which helps to maintain and continue the pregnancy. Listen, ध्यान से. Human chorionic gonadotropin hormone, this HCG, stimulates and maintains the corpus luteum to secrete progesterone until the end of the pregnancy. That means कि कॉर्पस लुटियम बना रहे और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता रहे, इसके लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन important role play करता है. Then HPL, human placental lactogen, this stimulates the growth of mammary gland during pregnancy. So mammary gland also enlarges during pregnancy, and it is filled with milk. It also starts forming milk during pregnancy. Relaxin hormone is secreted by the ovary actually, and this relaxin facilitate parturition by softening the connective tissue of the pubis symphysis. जो pubic bones हैं, pubic symphysis है, उनके connective tissue को soften करते हैं at the time of the pregnancy. So this also helps in at the time of parturition, and it also acts as storage organ. How? Because placenta stores glycogen for the fetus before liver is formed. लीवर जब तक नहीं बनता है तब तक प्लासेंटा ग्लाइकोजन स्टोर करता है, so that embryo continues to get nutrition. So placenta plays a very important role in the fetal development and continuation of pregnancy. During pregnancy, level of estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine etc. are increased in the maternal blood. They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintains pregnancy. All these hormones are secreted to maintain pregnancy and for fetal growth. The germ layers give rise to all tissues and organs, and the stem cells in the inner cell mass have the potential to give rise to all the tissues and organs. As the result of gastrulation, 3 germ layers are formed, and those germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. These germ layers have the capacity or have the potency to give rise to all the organs and tissues, and these are pluripotent. And stem cells,
in the inner cell mass are also pluripotent because they give rise to all the tissues and organs of the body. 3 जर्म लेयर्स हम लोग अभी पढ़ेंगे कि वो किस जर्म लेयर से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. ह्यूमन प्रेगनेंसी और दिस इज कॉल्ड gestation period lasts 9 months. What is gestation period? This is the period from implantation till the delivery of the baby, and this period, or this is also known as pregnancy period, is 9 months or gestation period. For cat it is 2 months, for dogs is 2 months, elephants 21 months. इसी तरह से आप कुछ और एनिमल का gestation period कलेक्ट करें और नोटबुक में लिखें. Organogenesis. Organogenesis is the formation of organs from 3 germinal layers. Just now we have seen that ectoderm layer becomes a digestive system, liver, pancreas, lungs, etc. Mesoderm layer becomes circulatory system, lungs, skeletal system, muscular system, and ectoderm layer becomes hair, nails, skin, nervous system, etc. So all the organs and tissues are formed from these 3 layers, 3 germ layers of gastrulation. Let us see the changes in the embryo during pregnancy. पहले वीक में फर्टिलाइजेशन होता है और द क्लीवेज स्टार्ट्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा 5वें दिन और 7वें 8वें दिन में इट गेट्स इम्प्लांटेड. इम्प्लांटेशन अकर्स 7वें 8वें दिन में इम्प्लांटेशन हो जाता है. उसके बाद 3 जर्म लेयर्स फॉर्मेशन होंगे. 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंटोडर्म, और उस 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन के बाद सभी ऑर्गन उसी से डेवलप होंगे, सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स उसी से डेवलप होते हैं. उसके बाद 3rd वीक में वीमेन विल नॉट हैव पीरियड, मतलब उनका मेंस्ट्रुएशन मिस हो जाएगा. मेंस्ट्रुएशन मिस होने का मतलब है दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, और उनके बैकबोन में वो थोड़ा क्रैम्प आने लगेंगे, एंड दिस क्रैम्प्स becomes the sign for pregnancy, for implantation and development of the baby. and इसके बाद 4th वीक मतलब फर्स्ट मंथ, 4th वीक और फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाते हैं. हार्ट्स आर फॉर्म्ड, हार्ट इज फॉर्म्ड, और जब हार्ट बन जाएंगे ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड गट स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन द फर्स्ट मंथ. यहाँ ब्लड वेसल्स बनेंगे, कर्पसल्स बनेंगे, जस्ट बताया था. जो कर्पसल्स है योक सैक से कर्पसल्स बनते हैं, और वो कर्पसल्स ब्लड वेसल्स के थ्रू फीटस को मिलने शुरू हो जाते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, प्रोवाइड हो जाता है न्यूट्रिशन उसके थ्रू. उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये 4th वीक में डेवलप हो जाते हैं. 5th वीक में क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. 6th वीक में 6th वीक में आईज और ईयर्स स्टार्ट्स टू फॉर्म. इट इज नॉट येट फॉर्म्ड बट इट स्टार्ट्स टू फॉर्म. एंड 7th वीक में फेस बनना शुरू हो जाता है. आईज बिकम्स गेटिंग सम कलर. माउथ और टंग जो है वो डेवलप होने लगते हैं. और 2nd मंथ में limbs and digits are developed. 3rd month, or we call it first trimester, end of 12 weeks or the first trimester. इस first trimester के end तक all the major organs like limbs, arms, legs, genital tract, sex organs, all are developed, well developed. Here the fetus का जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर हाइट हो जाता है उसकी, और उसका लगभग 14 ग्राम वेट होता है. ऐसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट होता है, 14 ग्राम, और उसकी जो लेंथ होती है फीटस की वो 7.5 सेंटीमीटर होती है ड्यूरिंग 5th मंथ. और बाय द वीक 20 वीक्स, इन 20 वीक्स में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस कैन बी एक्सपीरियंस्ड.
अब एम्ब्रियो से फिटस किस मंथ में डेवलप होता है? आफ्टर एम्ब्रियो बिकम्स फिटस इन द 9th वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट. So the first movement of the fetus can be seen in the 5th month, and appearance of hairs on the head can be seen. Here, between 16 to 20 weeks, baby starts movement. Fetus starts movement in the amniotic fluid. And end of 24 weeks, or this is second trimester. By the end of the second trimester, body is covered with fine hairs and eyelids separates and eyelashes are formed. And end of 9th month, the baby is ready for delivery. Parturition and lactation.